So there's a library called tidyverse which has a lot of inbuilt further extension of libraries. So we will see that today, and then in the subsequent classes we will also see how to import data. So please just start running, or please open that file on your system. It's you can see this. It's on your WhatsApp, the group. I'll just present my screen as. Okay. So guys, can we start? All of you have opened this file? Okay. Sure. So let's start with this particular library or this particular package called tidyverse. So tidyverse is what? Tidyverse is a package which in itself has a lot of other inbuilt libraries. So instead of हम बहुत सारी other libraries को install करने के बजाय हम सीधा एक बार tidyverse को अगर हम install करने हैं तो इसके ऊपर जो बाकी सारी dependencies हैं वो सारी भी साथ में install हो जाती है. So it comes as a package. That's why it's called a package. So when you install tidyverse for the first time, you would have to install tidyverse, and once you install it once, एक बार आपने install कर लिया, उसके बाद वो आपके यहाँ पर आ जाएगा, packages में आ जाएगा. If you see there is a tab here, आपके पास यहाँ पर packages में आ जाएगा वो tidyverse और उसकी सारी dependencies जो उसके साथ में है वो सारी की सारी आ जाएंगी. ठीक है. So what you need to do is, and what all other libraries are imported with it. You have something called as ggplot. ggplot2 we will see today, a little bit of ggplot. Since we are low on time, we might not be able to see other aspects, but what we will definitely see today is dplyr. So dplyr is a data manipulation library. We will see this today, and we will see ggplot. We'll try to see ggplot2. We'll try to see. There's an example that I've given which talks about a scatterplot. Okay, we'll talk about what scatterplots is, and then next class maybe we'll talk about more of bar plot, scatterplot, box and whisker plot. All of these tools will be very useful for you to understand your data. So when you're in statistics, and when you transit yourself from statistics to econometrics, you should be comfortable with data. So this is actually called the dirty part of data science, where you have to dangle into this corrupted data and this unclean and unsanitized data, and then you need to make sense out of it. So it's trying to find out diamond in a coal mine. Okay. So the kind of data files that you get from clients, or the kind of data sets that you are available, are not very well managed. What do you say, what girls get, pedicured and manicured data. So उस तरीके का data हमारे पास नहीं होता. ठीक है. हमारे पास जो data होता है वो really dirty data होता है, and we need to polish it up. We need to get those insights out of it. तो वो सारी चीजें जो हमने करनी होती है वो सब कुछ डेटा रैंगलिंग थ्रू होता है. तो डेटा क्लीनिंग एक पार्ट है, एंड देन getting some sense of data is basically through data manipulation, and then get further more advanced level, get a little more sense out of, let's see what the data is trying to speak in terms of graphics. That is basically your ggplot. So all of this is a subset of what is called as, let me write it down. So there is something called as exploratory data analysis. All of this is part of what is called as exploratory data analysis. Ask any data scientist, they will say that this is the part which is also the most important, but which is also the most tedious task, because you need to get comfortable with data. You need to see that why are there outliers, or what is or you have to clean the data and then make some kind of sense of from that data. So traditionally for exploratory data analysis, first we'll see the tabular method. For tabular method we will see this library called dplyr, and then for graphical method we will see ggplot, or in our case ggplot. हम ये देखेंगे. Let's quickly run through it. So what I want you to so for in my case, guys, I have already installed this package called tidyverse. The moment that I installed R, I had installed tidyverse. So all you need to do is install this package called tidyverse. It will automatically download all the other dependencies in terms of libraries which we require. So once you install this package, it's available for you in your system. But then again, to call it,
you need to say library, then parenthesis tidyverse. So once you install it, installation will happen one time on your system, but calling will, you need to call it every time when you are running. So for when you close this session, all these libraries will go, but it will still be installed in your system, as in your packages it will be installed, but you would have to call it. Okay, so it's some kind of a system where you have to install it once, but it's something like आपने एक बार Excel download कर लिया तो आपके पास Excel है system पर, but every time you have to open it to do any kind of data analysis. So something like that you need to install it, and then you to call it to basically bring it to the environment or the working directory, so to say. समझ में आया guys? Can all of you have run these two codes? Any issues? इंस्टॉल हो गया होगा, उसमें नीचे आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई होगी इंस्टॉलेशन की, एंड देन उसके बाद यू वुड हैव रन tidyverse, तो वो अटैच कर रहा होगा पैकेजेस इस तरीके से, ggplot ये अटैच कर दिया. These are different packages or different libraries which are attached with tidyverse. One is, as I told you, one is ggplot, then dplyr, then you have tidyr. Basically, as the name suggests, to turn your data into some tidy sense. Then you have reader, which helps you basically read all kinds of different files. Be it, अभी तक आपने Excel फाइल देखी होगी, but Excel का ही एक modified format होता है which is called as CSV, comma separated values, and there's another form called tab separated values. ठीक है, तो TSV and CSV files हम in the next few classes we will see that how do you actually import these files. So I'll be giving you certain data sets, as I told you that these Kaggle and all these websites have a lot of data sets. So we will go on to these websites, we'll download a data set, and then we'll start utilizing that data set, and ये पूरा exercise हम उसके साथ भी करेंगे. ठीक है, then you have other libraries called purrr, you have tibble, and you have stringer and forecasts. ठीक है, so these are the 8 different libraries which are dependencies associated with tidyverse. Then now what we are going to do is we are going to install a package called Gapminder. What Gapminder is basically a data set, a two-dimensional data set which has data on. Let me show you what this data has. So all you need to do is first guys, import this package called Gapminder, and then call this library called Gapminder. In this library you will get all this data. So let me just run this. So if you see guys, this Gapminder data set is basically a data set of country wise. You have countries, all the countries in the world. Okay, then you saying Afghanistan being repeated many times, it's because it is taking many different years. Every 5 years data is taken for every particular country. You have the continent associated, and then you have 3 economic variables related to each particular country for different years. You have life expectancy, you have population, and you have GDP per capita. So these are the 3 numeric data points that are given to you for each particular country, and for each particular country you have data till 2011. So every 5 years you have this data, and the last data point is I think 2007 or 2011 in this data set. So again, we will be using this data set because it's a very common data set for data, at least in terms of learning and in terms of exploring and getting your hands dirty with data. So it's usually suggested that you start off with a well curated data set, and then we can go on into all those horrible data sets where you need a lot of cleaning of data to be required. Okay. So please run these three lines. First installing this package, then calling this particular library, and then checking that you have this data which has 1704 rows. Okay, that means these are the number of examples. And what does this 6 say, guys? ये 6 क्या बता रहा है? What does it tell you? Columns or dimensions. So every data point is given for these 6 dimensions. Okay, so let's run that, and then what you need to do is, now again, as I told you, once you run this particular package, all these dependencies are there in your system, but you need to call these dependencies. So now we will see for data wrangling and data manipulation. See, you want to see data in different sense. Suppose you want to see that boss, India ka
मैं देखना चाहता हूँ 2007 में क्या जीडीपी था, या इंडिया का मैं पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना चाह रहा हूँ. सो यू आर ट्राइंग टू सी कि मुझे सिर्फ इंडिया का देखना है, एंड मुझे डेटा में मुझे डेटा को नए वेरिएबल में नहीं ले जाना, मुझे इसी डेटा का एक सब सेक्शन देखना है. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ सबसेट, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अनदर वेरिएबल. मुझे वेरिएबल भी क्रिएट नहीं करना, मुझे इसी डेटा के अंदर एक छोटा सबसेट देखना है. से इंडिया 2007 देखना है मुझे, या फिर मुझे देखना है कि अफगानिस्तान 1958 देखना है या 1957 देखना है. सो या मुझे देखना कि फॉर एग्जांपल एशिया की कंट्रीज के अंदर क्या क्या चल रहा है. ठीक है. सो ऑल ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा in terms of subset, if you want to see, you need to use this dplyr package. So first what you do is you call this particular library, and what we will now use is we will use filters. Now filters, how are filters used? We will use verbs. ठीक है. Verbs, what are verbs? Verbs extract observation. तो आप एक verb दोगे कि बॉस मुझे ये वैल्यू चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट टू फिल्टर. मुझे पूरे डेटा में से कुछ एक पर्टिकुलर filter, मुझे एक particular value चाहिए. So what this filter does, it looks into the data and then says, and then creates a nest that out of this data the command has been given to me that कुछ verb, कुछ action निकालना है, कोई action निकालना है, कोई particular subset निकालना है. So it tries to extract that. ठीक है. So what you need to do is, the way that you create it, suppose I want to see that 1957 का मुझे सिर्फ ये अभी तो हर कंट्री का दे रखा है, मुझे सिर्फ कंट्री वाइज चाहिए, सिर्फ 1957 का डेटा चाहिए मुझे सारी कंट्रीज का. ठीक है. सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज I say Gapminder, which is my data. Then clearly remember guys, you use a code which is called as a pipe. This is called as a pipe. What is this pipe? This pipe is used basically to link one. What does a pipe do? What does a pipe do? Pipe links whatever is there in the front of it to the back of it. This is how a pipe works, guys. So when I say a pipe, how does a pipe कुछ इस तरीके से काम करता है ना guys, कि यहाँ से कुछ इनपुट जाएगा और यहाँ से कुछ आउटपुट निकलेगा, बट जो इनपुट जाएगा उसी पे वो काम करेगा. That is what we in R we called as pipe. It is given as percentage sign, greater than sign, and then percentage. So it takes whatever is there in this part. यहाँ पर जो भी होगा, whatever is there, से x है यहाँ पर, ये x को लेगा और उसी के ऊपर कुछ काम करेगा आगे जाकर. सिर्फ उस सबसेट पे उस पे कुछ उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करेगा. We will just see कि वो मैनिपुलेशन कैसे करेगा, उसके अंदर और क्या मैनिपुलेशन हो सकते हैं. We will see. This in R is called as a pipe. ठीक है. पाइप समझ में आया? पाइप का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना, बस एक जगह से दूसरी जगह पे जो आगे दे रखा है उसको पीछे लेके जाना. क्लियर है गाइस? पाइप समझ में आया? Yes, no. So what you do is you say that मुझे बॉस ये मेरा डेटा है गैपमाइंडर का, ठीक है, इसको आप लो. अब उसके ऊपर अब आप वर्ब लगाना शुरू करते हो. ठीक है. अब आप उसके अंदर के सबसेट निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर के फर्दर रेफरेंसेस निकालने की कोशिश करो. बट एट द सेम टाइम गाइस, डू रिमेंबर, जब आप ये डिप्लेयर का पैकेज यूज कर रहे हो और जब आप ये पाइप यूज कर रहे हो, आप ओरिजिनल डेटा सेट को नहीं छेड़ रहे हो, आप सिर्फ एक नया व्यू बना रहे हो. इट इज समथिंग लाइक मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये मेरी पूरा ये फॉर एग्जांपल ये पिंक प्रोफेसर, ये एक व्यू है, बट ये भी तो एक व्यू है. Isn't this also a view of the same thing? So this is what you are trying to say. You are not changing the entire sheet, वही है, बट एक ही शीट के ऊपर आप फोकस जो है अपना आगे कर सकते हो, फोकस अपना पीछे कर सकते हो. That is what you are trying to do. So you are not changing the sheet, but you are trying to zoom in into certain factor and then come out. Okay, that is what your intention is. So let's see this. So what you say is, then उसके बाद एक बार आपने अपने पाइप लगा दिया, उसके बाद वो बॉस कहता है कि बॉस मुझे तो आप बताओ कि अब आप करना क्या चाहते हो. ठीक है, आप मुझे कुछ एक्शन बताना चाहते हो, कुछ इसके ऊपर मुझे कुछ एक्शन करना है. मैंने डेटा सेट ये लिया, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ तक ले आया ऐसे, अब इसके ऊपर मुझे बताओ कि क्या एक्शन करूं. तो यू से दैट बॉस फिल्टर द ईयर फॉर मी, मुझे सारा का डेटा दो, बट मुझे जो डेटा चाहिए मुझे सिर्फ 1957 का डेटा चाहिए. So what it will do for you is
it will only look at a subset of your entire data, and it will find only the year 1957 and give all the corresponding values for all the countries for the year 1957. Let's start to run this. Can you see initially your data was, if you see, your data was 1704 rows, but now it has converted into only 142 rows. But now what you know is you have 142 countries in this data set. So now with each country you now know कि अच्छा अफगानिस्तान का ये 1957 में सिचुएशन था, अल्बानिया का ये था, आई एम सरप्राइज्ड अल्बानिया यहाँ क्या कर रहा है, मे बी इट वाज स्टिल देयर, ठीक है, अल्जीरिया का था, देन अंगोला का था, ठीक है। तो ये सारे आपके अल्फाबेटिकल आपके पास सारे के सारे ये आ गए, समझ में आया गाइस। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप नीचे देखो, आप गैपमाइंडर फिर से टाइप करके देखो, आपको पूरा का पूरा वापस डेटा मिल जाएगा। दिस इज जस्ट शोइंग यू अ व्यू, ये देखो आपको पूरा डेटा ये रहा आपका, समझ में आया गाइस। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ व्यू ऑफ योर ओरिजिनल, a kind of a specialized subset of your entire data, you use this kind of filtering process through pipes. And behind the hood, the library that is working is dplyr, which is working in terms of data manipulation. समझ में आया नहीं आया? Any doubts? पक्का? चलो. Now what you can also do guys is that now you can give multiple conditions to it. अब आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, क्योंकि अभी भी देखो डेटा जो है, अगर मैं अभी भी ये रन करता हूँ तो अभी मेरे पास 147 और 142 और कंट्रीज है। नहीं, मुझे ये सारी कंट्रीज देखनी नहीं, मुझे सिर्फ देखना है चाइना या इंडिया का देखना है मुझे, ठीक है। सो यू कैन ऐड फर्दर, यू कैन फर्दर रिफाइन योर सर्च। तो द गुड पार्ट अबाउट इट इज कि आप नया कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हो, बट आप अपनी सर्च को फर्दर रिफाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। सपोज यू वांट ओनली एशिया, तो आप यहाँ पर कंट्री की जगह पे यहाँ पर मार्क कर दो कॉन्टिनेंट एंड सिर्फ एशिया लिख दो, तो वो सिर्फ आपको एशिया की वैल्यूज दे देगा, ठीक है। सो अगेन let us try guys, please try the same code for 2007. Try to find out for Africa, do it by yourself, and it's always again a good practice when you're using filters like these. Always try to do it in 2 lines so that you know that एक के बाद एक कौन सा filter लगा है, नहीं तो कई बार confusion हो जाता है। Please try the way that I have done it for 2002 China. I want you to do it for 2007 Africa. Check it out guys. हुआ किसी से? Can someone paste the code? Come on guys, क्या होगा इसमें? Anyone? Okay, so Bhumika is giving us a code. Let's see Bhumika का code क्या है. So let's run it here. So see what has happened. Again guys, please remember double equal to sign, no single equal to sign, ठीक है, assign नहीं कर रहे हो आप, and then continent and double equal का sign, and be very careful. ये these are when you are using double quotes, basically यहाँ पर आपको ये case sensitive है सब कुछ, ठीक है। Let's run this and see, आपके पास अफ्रीका की सारी कंट्रीज आ गई for 2007, but अगेन एज आई एम मेंशनिंग टाइम एंड अगेन, ये आपके ओरिजिनल डेटा को कुछ नहीं छेड़ता। आप एंड आई टेल यू कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हम नए वेरिएबल्स बना सकते हैं और फिर उसके बाद उन नए वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। मैं अभी बाद में क्या करूंगा, ये मैंने एक नया अपने ही डेटा सेट में से एक छोटा वर्जन अफ्रीका का बना दिया। सपोज मैं कुछ मॉडल कर रहा हूँ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अब मेरे पास एक पूरा बड़ा डेटा सेट है, बट उसके बाद मैंने उसको छोटे छोटे डेटा सेट्स में बांट दिया। अब मैं एक मॉडल बनाऊंगा अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि हो सकता है अफ्रीका का मॉडल एशिया पे ना काम करे, एशिया का मॉडल जो है वो यूरोप पे ना काम करे, यूरोप का मॉडल जो है वो अमेरिकाज पे ना काम करे। सो मैं 5 अलग अलग मॉडल्स बना के चेक करना अपनी जो भी हाइपोथेसिस है उसको पॉसिबली टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कई बार आप मेन डेटा को नहीं छेड़ते हो, आप उससे फर्दर रिफाइंड पहले आप एनालिसिस करके देखते हो, एंड देन उसके बाद आप देखते हो कि next what can I do with this particular variable. If you have created a smaller variable out of your entire data set, then can I get some insight out of it. समझ में आया guys? सबको ये कोड समझ में आया? अरे सिर्फ परिबा और भूमिका को समझ में आ रहा है क्या? Again an update guys regarding laptops. There is some issue from college. I will still confirm it कि कब laptops आएंगे आपके,
It's not just with you guys, it's with the entire other all the other streams as well. There's an issue. I'll go to college tomorrow and I'll just confirm what has happened. And you might have to come to college to pick those laptops. I mean, not might, you have to come to college to pick those laptops. Then let's run the 1957 code as well, or let it be, छोड़ दो. और ये हमने ये देख लिया था, ये भी रन करके देख लिया था. Then now what if I want that was, I don't want this data, whatever numeric data suppose मुझे चाहिए, I don't want it in the format की alphabetical format or whatever format is given to me. ठीक है, मुझे डेटा चाहिए या तो ascending order में या descending order में. सो आप सॉर्ट करना चाह रहे हो, कई बार आप सॉर्ट भी करना चाहते हो डेटा कि बॉस सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा किसकी है, आई वांट टू सी, या सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है, आई वांट टू सी. सो इफ आई वांट टू अरेंज अ पर्टिकुलर कॉलम, इफ आई वांट टू अरेंज अ पर्टिकुलर कॉलम, आई यूज फिल्टर वाला प्रोसेस तो वही है, फिल्टर और ये सॉरी पाइप वाला कंसेप्ट तो वही है. पाइप के आगे जो जाएगा जो भी वेरिएबल है उसको पाइप लेगा और फिर उसके ऊपर ये काम करना शुरू कर देगा. ठीक है. सो in Python we have something called pipelines, but it's not exactly similar to this, but again the intuition is very similar. ठीक है. You save a lot of steps basically through pipelines. ठीक है. But that pipe and this pipe is a little different, just in case if you are aware of pipelines in Python. Now, so what you have is you take this data, and then what you want to do is, I want to arrange all the countries on the basis of life expectancy. Now when you arrange these, how many countries, how many data points will you get without running this, guys? How many data points will you get? If you run this, don't run it, just try to imagine if you run this command, how many data points will you get? सोच के बोलना. मेरे स्पीकर खराब है. Yes guys, कितने डेटा पॉइंट मिलेंगे आपको अगर इसको रन करोगे? कितनी एग्जांपल्स होंगे? विदुषी says all of them. Exactly, it will arrange all of them. ठीक है, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को अरेंज करेगा. बट क्या all will it make any sense? Can you think, will it make any sense? आप सारी कंट्रीज देख रहे हो, फिर सारे ईयर्स देख रहे हो, फिर उसके बाद सारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. It will again be a very difficult and very arduous task to imagine that data. तो बेटर चीज क्या होगी, बेटर चीज क्या होनी चाहिए आपके लिए? अगर आपको इस डेटा को देख रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, तो आप किस तरीके से उसको सोच प्लान करोगे? हाउ वुड यू प्लान इट? अगर आप इसको रन कर दोगे, लेट्स रन दिस, तो इसने तो मुझे सारी की सारी रोज दे दी, इसने तो मुझे सारा दे दिया. 1704 और उसने बता दिया कि बॉस सबसे कम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज तक देखी है हमने, वो देखी है रवांडा. ठीक है. एनीवन नोज वेयर रवांडा? अच्छा, रवांडा कॉन्टिनेंट तो आपको यहीं दिख गया. Rwanda reminds me of a beautiful movie by the name of Hotel Rwanda. Has anyone seen that movie? किसी ने देखी है? डॉन चे की है. किसी ने नहीं देखी होटल रवांडा? Okay guys, homework for weekend. होटल रवांडा. Beg, borrow, steal, Netflix, Amazon Prime, कहीं से भी देखो. You need to watch this movie. होटल रवांडा, beautiful movie. ठीक है. Then जब ये देख ही रहे हो तो इसका पड़ोसी भी देख लो. Has someone seen a movie called Blood Diamonds? किसी ने ब्लड डायमंड्स देखी है? ब्लड डायमंड नहीं, ब्लड डायमंड है, ब्लड डायमंड्स. एक जने ने ब्लड डायमंड देखी है मूवी. तो गाइस चलो, होटल रवांडा मैं समझ सकता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ी सी ऑफ बीट है. ऑस्कर विनर मूवी है ब्लड डायमंड. चलो, ब्लड डायमंड आई थिंक इट्स देयर ऑन Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स पे, किसी पे तो है 100%. चेक इट आउट गाइस. यू इनफैक्ट ये सबसे पहले देखना. दिस इज ऑन सीरा लियोन. ठीक है. एंड दिस इज अगेन ऑन रवांडा. चलो ना, so we come to this now. Does this make any sense? This doesn't make any sense. मैं डेटा को कभी कोई साल आ रहा है, कभी कोई साल आ रहा है, कभी कोई साल आ रहा है. So what would you think would be a better way to check this data? If I may need to make any sense out of it, what should I add to this? Exactly. या तो मैं इसको किसी कंट्री के लिए देखना शुरू करूंगा, या फिर मैं इसको किसी ईयर के लिए देखना शुरू करूंगा. So what I do is इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये मैंने करा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका दूसरा एक वर्जन निकालता हूँ. कि वो कह रहे हैं बॉस मुझे अरेंज तो कर दो, पर पहले मुझे क्या करो, पहले फिल्टर करके दे दो.
ठीक है, फिल्टर कर दो से ईयर इज इक्वल टू से 2007 फिल्टर कर दो, और फिल्टर करने के बाद नाउ गाइस विल दिस गिव अस अ रिजल्ट, क्वेश्चन, विल दिस गिव अस अ रिजल्ट, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, सोचो। 2007 doesn't exist in the database. नहीं 2007 तो शायद से एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? I'm just guessing like what नहीं is available. आई थिंक 2007 एग्जिस्ट करता होगा। नहीं 2002 कर लो, मैं अभी 7 पे चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। एग्जैक्टली परेवा, पाइप का कंसेप्ट गाइस, ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं जब आप dplyr लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो वो इस पाइप पे डिपेंडेंट है। यहां से इसने पाइप उठाया, ये वाला डेटा उठाया, उसके ऊपर फिल्टर किया, बट उसके आगे की पाइप तो मिसिंग है। जब तक ये पाइप वापस नहीं आएगी, और वो इसी के आगे होनी चाहिए, नीचे यहाँ नहीं आएगी, रेंज के आगे, वो यहीं पे आनी चाहिए। सो टेक whatever is in front of it and work my way around on it, and then work on life expectancy. Now if you check this, can you see all 2007 data and then life expectancy? Now this makes a little more sense. Now if you want to add even more qualification, आपको पता है ये सारे अफ्रीका की कंट्रीज ही आ रही हैं, एक बीच में बेचारी अफगानिस्तान है, बट इफ यू वांट फर्दर क्वालिफिकेशंस की, नहीं बॉस मुझे तो चाहिए सिर्फ से एशिया की कंट्रीज, तो अब एक और ऐड कर दो, और एक इसके नीचे एक और पाइप ऐड कर दो, और लगा दो, पहले फिल्टर लगा दो और पाइप लगा दो। समझ में आया गाइस ये कंसेप्ट? Don't miss on the concept on pipe, क्योंकि pipe is something which is an integral thing to link one data point, one filtering process to the other filtering process. Yes or no? So, Yes, Nisha. so why are you adding 5 after 2007? In earlier step you have not added 5. देखो पहले ये तो फिल्टर एक के बाद एक फिल्टर लग रहा था ना, ये तो फिल्टर के अंदर ही चल रहा था। अगर आप फिल्टर यूज कर रहे हो तो वो फिल्टर के अंदर तो ये दोनों चीजें एक साथ कर देगा, बट हमारा फिल्टर खत्म हो गया है, उसके बाद आप एक बार फिल्टर खत्म हो गया, उसके बाद आप डेटा को अरेंज करना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया निशा, आपने पहले ये डेटा देखा, ठीक है, उस डेटा में आपने कहा कि यार मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए 2007 का डेटा, तो उसने 2007 तक का डेटा दे दिया आपको, बट ये पूरे 2007 का डेटा है। अब आप कह रहे हो कि इस 2007 के डेटा में भी मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो डेटा है उसको अरेंज करना है, तो दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन ना, अरेंज तो पूरा, सिर्फ फिल्टर नहीं कर रहे हो आप, अब एक नया फंक्शन ऐड कर रहे हो उसके ऊपर, तो आपको इस डेटा, अब एक जो नया वर्जन आपका डेटा का है उसके ऊपर एक नया आप पाइप लगाओगे, मतलब इस डेटा को इनपुट दोगे और उसके ऊपर ये फर्दर काम करेगा। हैड इट बीन फिल्टर, सो आप एक और फिल्टर कॉमा लगा के नीचे एंटर करके फिल्टर ऐड कर दो, एक और continent is equal to Asia। समझ में आया? चलो, everyone else guys, समझ में आई ये चीज? Now, similarly, what you can also do is, at times you are not interested in, ascending order, you are interested in descending order. For example, GDP आपको descending order में चाहिए, GDP per capita, या पॉपुलेशन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। कौन सी कंट्री की व्हाट डू यू गाइस थिंक कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा होगी? एनी गेसेस? बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी कंट्री की? यू आर क्लोज बट एक्चुअली नॉट, नॉर्डिक की नहीं है, नॉर्डिक कंट्रीज की नहीं, यूजुअली इट्स नॉट, बट दे आर वेरी क्लोज टू इट। Japan? It's Japan. It's usually Japan. The most grayed society of the world. You understand graying of society? Society is graying. क्या मतलब होता है उसका? What does graying of a society means? Elderly population is more. In fact, if you see, I'll send you a couple of links. Japanese जो जैसे हमारे पास हमारे MCD है दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जापान की जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, they are promoting dating apps. They are asking people to date and then get married and then have children so that their population increases. Okay, so one of the reasons that they face a lot of deflationary उनकी इकोनॉमी रहती है, डिमांड बहुत कम रहता है, बिकॉज एल्डरली लोग हैं, ज्यादा उनका डिमांड होता नहीं है, ठीक है, सो therefore they need that boost. So let's run this and see. हमारी देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी तो, क्योंकि 2007 का ही हमारे पास लास्ट डेटा है, यू सी जापान ऑन टॉप।
So again, as I told you that you can use this pipe operator to combine multiple dplyr verbs in a row. एक के बाद एक और फिल्टर आप यूज कर लो और अरेंज और जितना मर्जी आप क्वालिफाई उसको कर लो. You can do all of this. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसी पॉपुलेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले गए. ठीक है. Now what I want you to do is give me the descending order of GDP per capita for the year 2002. Check this out. I want descending order of GDP per capita. मतलब that means highest किसकी है, फिर उसके बाद next highest किसकी है, and 2002 का चाहिए. Write down a code for that. Try to write a code for that. अपने आप लिखना guys and paste it on the chat box. Anyone guys? Okay, great. Bhumika's code and runs fine as well. तो आपको GDP per capita आपको सबसे पहले कंट्री का मिल गया, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद नीचे, इस तरीके से. ठीक है. Now similarly what you can also do with this is you can actually, without changing the original data, without, remember, I mean, try to note guys what I'm trying to, what I'm saying, without changing the original data you can create a alternative view of the data itself. Now what am I saying? I'm saying there's something called mutate. Now what mutate does is आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में, या फिर आपकी जो जीडीपी पर, या आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो से मिलियंस, या पॉपुलेशन को ले लो. पॉपुलेशन जो है ये यहाँ पर आई थिंक इज 287 मिलियन. ठीक है, 287 मिलियन में. now instead of such big numbers I want my entire population to look like कि मुझ पर इतना बड़ा नंबर ना है, मुझे मिलियंस में मिल जाए. ठीक है. तो टू कन्वर्ट इट इनटू मिलियंस, एंड मुझे नया कॉलम नहीं बनाना, मुझे बस इसी कॉलम का एक व्यू चाहिए जिसमें ये सब कुछ मिलियंस में हो. तो मिलियन में करने के लिए मैं किस चीज से डिवाइड करूंगा गाइस? अगले साल कैट देना है आप लोगों को कुछ को 10 raised to the power 6. ग्रेट. 10 raised to the power 6 है ना? हाँ, 10 raised to the power 6. ठीक है. सो now what we need to do is, say मैं इसकी जगह पे मैं एक और नया ऐड कर देता हूँ यहाँ पर Gapminder, and I say mutate, and what I want to mutate is I want to mutate my population column, and population column को इस तरीके से करना चाहता हूँ कि population should be such that it should be divided by a million. 3, 4, 5. So what it will do is it will just create an alternative view जहां पर data change नहीं होगा, but ये सारी चीज मिलियन में हो जाएंगी. See this? Can you see? Hey, हाँ, ठीक. ये आपकी सारी की सारा डेटा आ गया, but population देखो, population सबकी मिलियन में, सारी population अब मिलियन में. ठीक है. So this is how you can actually have an alternative view of the data. You can do certain manipulation on it. At times आप नए features भी create कर सकते हो. ठीक है. कई बार आप there's something called as feature creation or feature engineering as well. ठीक है. And the maximum amount of money that is made in data science is if you can create new features out of the existing data set. ठीक है. There's something which is given to you, but you analyze something and you create something new out of it. So when you talk about this, so what we have done is we have changed this population column, and we've said that please divide population column with 1 million, all the entire column, and give me the entire data set. Similarly we can do it for life expectancy. तो life expectancy अभी था years में, उसको आपको months में convert करना है. So just multiply it by 12, आपके पास months में आ गया ये. Now what if instead of changing or mutating a data point or a column, if you want to create a new column, but that new column is an alternative view of the column, alternative view of the data set. आपने Gapminder जो आपका data set है वो change नहीं किया, but आपने एक नया column बनाया और उसको आपने analyze करना शुरू कर दिया. So you are not changing the entire data set, but you are just creating a new variable, ठीक है, which is created out of manipulation of the existing variables. So here what you do is
अभी तक आपके पास जो कॉलम्स थे वो 6 कॉलम्स थे. Now what you have is, now see what happens is, मैंने एक नया कॉलम बनाया life expectancy months, which is equal to life expectancy वाला column into 12, and see what happens. This will now be 7, but the original data set is the same. Original data set same ही है, but यहाँ पर अब एक नया कॉलम आ गया. ठीक है, आप फिर से गैप माइंडर करोगे, आपको गैप माइंडर में सिर्फ वही 6 कॉलम मिल जाएंगे. So this is something which is useful when you analyze, you want to create a new kind of a subset. Similarly, you can use all of these variables together. Now what we will do is, we have a data set for you which is the Uber's data set, and I've already sent you a Python file for it, जिसमें आपको Python में उसमें Python का कोड लिखा हुआ है. I want you to try something similar on R and see that if you can play with the data. ठीक है, आपके पास Python file already पहुंचा हुआ है Uber data set का. ठीक है, which is on data wrangling. I'll just highlight which data set, which file is that. Try to see if you can draw a similar parallel to it in R. ठीक है, a similar parallel to it, जो जैसे उसके अंदर manipulation हुआ है. ठीक है, now what we have is, here we have used all three. Suppose we want to use filter for the years, we want only 2007 data. We want a new column which has been added. ठीक है, तो पहले 2007 का डेटा मिलेगा आपको, उसके बाद एक नया कॉलम ऐड होगा, और उसके बाद जो नया कॉलम ऐड होगा उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कर दिया. सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट मंथ्स और सबसे नीचे सबसे लोएस्ट मंथ्स. So you can use, and again do not forget the use of your pipes. Clear है guys? Yes or no? समझ में आया यहाँ तक? चलो, great. So now before ending the class, what I wanted to do with you guys is just give you a small introduction on, a very small introduction of ggplot, because dplyr में ये data manipulation होता है. I wanted to give you a small kind of a small visual of what it is when you talk about this thing. Okay, just a second guys. Yeah, so let's see data visualization. So data visualization, the counterpart guys who are doing Python, the counterpart of ggplot2 in Python is matplotlib, and based on matplotlib is a better library called seaborn. ठीक है, I've already shared a couple of files with you on seaborn, ठीक है, which uses a data set called tips. Now what you have in data visualization is that जो आपने अभी dplyr library यूज करी वो informative है, but information in terms of text is not very user friendly. There is something about there is an adage which we have, which is called as a picture speaks more than 1,000 words. So similarly we carry a similar spirit in our experience with data, where pictorial form of data representation can give you much clearer view of relation between variables as compared to say your normal tabular data. So it's always good to, again, this is where you will have to play a lot with data to understand what the data is trying to speak, especially when you're running regressions in your next course, in the next semester. You need to check in, you need to make these dirty models, you need to see that okay boss, इस तरीके से हमारा relationship आ रहा है x and y के बीच में, अगर इस तरीके से relationship है तो किस तरीके से हमारा functional relationship होगा, वो linear line का relationship है कि वो exponential relationship है, कि वो log form में relationship ज़्यादा अच्छी तरह express कर पाएगा, कि वो squared form में relationship express कर पाएगा. So we can have, and again अभी तो मैं सिर्फ 2 variable के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो plots है वो सिर्फ 2 variable में देख सकते हैं, 3 variable में भी देख सकते हैं, 3-dimensional plots, but more than 3 dimensions we cannot see. ठीक है, now 3-dimensional in itself is very difficult to interpret when it comes to data science, and again difficult to make as well. Now what we have in ggplot is a data visualization package built in R, and which we are going to call through
library called as ggplot. So once you have installed this particular library, once you have installed tidyverse, all you need to do is call library and ggplot2. I don't think I had done that, so please make sure that you do this. So now ggplot is in your active session. The moment that you close off this session, your ggplot will again go. You would have to call it again. Now you want to see certain kind of relationship. ठीक है, आज हम एक ही relationship के बारे में बात करेंगे. ठीक है, between variables. ठीक है, and what variables are we trying to see? We are trying to see that 1952 में, यार इसको चेंज करो यार, नया लेके आते हैं, पुराना हो जाएगा. 2007 के अंदर. Now guys, what will this do? पहले मुझे बताओ कि ये क्या करेगा, ये दो लाइन क्या करेंगी, ये दो लाइन क्या करेंगी गाइस? नहीं सिर्फ अच्छा, हाँ ओके, मैंने वो भी सिलेक्ट कर दिया. सो व्हाट दिस इज डूइंग इज, आप अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक तो आप इतना रन कर रहे थे. दिस वाज क्रिएटिंग जस्ट अ न्यू व्यू, बट नाउ यू हैव स्टेप अहेड एंड मेड अ न्यू वेरिएबल आउट ऑफ इट. अब आपने एक नया वेरिएबल बना दिया उसको. सो जो आपने सॉर्टेड व्यू बनाया था, जो आपने एक असॉर्टमेंट ऑफ व्यू बनाया था पूरे डेटा सेट का, उसको आपने एक नया वेरिएबल ही क्रिएट कर दिया, and which is Gapminder 2007. Let's run these three and we have 2007 का आपके पास सारा डेटा आ गया. Now you want to see some kind of relationship. If you want to see some kind of relationship between, say, your any variables, any two variables you want to see. किसी दो वेरिएबल्स को आप प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है, कि से पॉपुलेशन और जीडीपी पर कैपिटा कैसा मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर अ बेटर थिंग टू डू वुड बी एक्चुअली, इसमें अगर आप जीडीपी कैप और पॉपुलेशन एफिक्स, ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, द फर्स्ट स्टेप इज टू फर्स्ट असाइन अ वेरिएबल, कि अच्छा किस वेरिएबल्स में से आपको प्लॉट करना है डेटा, ठीक है. सो यू नीड टू चेक कि अच्छा कौन से वेरिएबल के अंदर जाओगे एंड वहां से आपको डेटा पर निकाल के आपको प्लॉट करना है, ठीक है. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट दिस हैज 142 रोज, तो ये 142 रोज को प्लॉट करेगा. इस प्लॉट के अंदर 142 रोज का डेटा सारा प्लॉट होगा, बट इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस 142 वी विल बी विजुअलाइजिंग दिस 142 कंट्रीज, ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, इट आस्क्स यू दैट if you want to make a plot, if you want to make a, say we are talking about a scatter plot, give me something on the x variable. तो x वेरिएबल पे हमने कहा कि चलो ठीक है, मुझे जीडीपी पर कैपिटा दे दो, कि x मेरा इस तरीके से वेरिएबल होगा कि मुझे कुछ रिलेशनशिप चाहिए जहां पर यू हैव जीडीपी पर कैपिटा एंड ऑन y एक्सिस यू हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी. What do you expect guys? What should happen? इन दोनों के रिलेशनशिप कैसा होगा? यहाँ अगर जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है तो वो कौन सी कंट्रीज हैं? मैं वो चेक कर लेता हूँ, लोअर केस ऑफ जीडीपी पर. यहाँ अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स व्हाट आर दीज कंट्रीज? आर दीज रिचर कंट्रीज और पुअर कंट्रीज? इतना एक्स एक्सेस पे आगे जाओगे. रिचर कंट्रीज के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? So you want to see, you know that this will somehow be a positive kind of a relationship. You can expect that this will be a positive relationship, but you want to see all these 142 countries mapped out on this to see if this is a linearly related countries, कि linear अगर इतना से बढ़ेगा तो इतना से increase होगा, इतने से increase होगा, अगर इतने से बढ़ेगा तो इतने से होगा, or is it telling you something non-linear relationship between these two variables, ठीक है. So scatter plot in general is again a kind of a plot which tells you relationship between two variables, that how are they associated with each other, ठीक है. Then so it's kind of a this is typically a bivariate analysis guys. Bivariate analysis, दो variables का analysis कर रहे हैं. We will also see something called univariate analysis. पहले univariate actually करते हैं, but अभी हम bivariate करते हैं, जहाँ पर आप एक variable का analysis करते हैं. We'll talk about something like box plot or line graph of a particular variable.
Okay, here we have a scatter plot. I'll give you an entire list of all these plots. कैसे करना है क्या? There are certain cheat sheets available as well. ठीक है, I'll give you a couple of these cheat sheets as well. ठीक है, so we want to see this relationship. I hope यहाँ तक क्लियर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं. Yes, ये तो परिभाई ये तो हमें खुद ही सोचना होगा कि अच्छा कौन सी चीज किस चीज पे डिपेंड करेगी. यूजुअली मैथ्स में डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आता और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आता? Independent variable usually comes on the x-axis. ठीक है, dependent variable comes on the y-axis. ठीक है, ठीक है. तो don't confuse it with demand, your price and demand. ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये चीज उल्टी होती है क्योंकि हम we use that valuation kind of a model. ठीक है, but in general हम जब भी कोई वेरिएबल लेंगे तो हम कोशिश करेंगे अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जीडीपी पर कैपिटा पे डिपेंड कर सकते हैं, बट उल्टा नहीं होगा. अगर दोनों आपस में रिलेटेड तो फिर तो आप कहीं भी किसी को भी डाल दो. ठीक है, देन एंड अ लॉट ऑफ दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस आल्सो. जीडीपी पर कैपिटा में क्या गलती हुई? क्यों? ना आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फर्स्ट गिव यू दिस वेरिएबल कि अच्छा मुझे ये वेरिएबल बता दो कि इस वेरिएबल में जाना है. Then what it wants is that boss give me and take these variables and map it to a aesthetics graph. Okay, what is this aesthetics graph? AES जो ये short form है. Now this aesthetics graph is a visual dimension of a graph जो आपको communicate करेगा कि क्या कर. अगर आप बार प्लॉट लोगे तो भी आपको बार प्लॉट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा उसमें अंदर. अभी हम x और y दोनों ले रहे हैं क्योंकि हम स्कैटर प्लॉट देना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये दोनों वेरिएबल्स देंगे x एंड y. ठीक है, एंड देन उसके बाद वो बोलेगा कि अच्छा एस्थेटिक्स प्लॉट तो चलो ठीक है, मैंने आपको एस्थेटिक्स प्लॉट दे दिया. ठीक है, आपने कहा कि चलो ठीक है बॉस मुझे ये एस्थेटिक्स का प्लॉट दे दो. वी सेड ओके, वी आर गिविंग यू दिस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देन इट ऑल्सो वांट्स, यहाँ तक आपका ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला आपका जो है ये आपका यहाँ तक लाइन खत्म हो गई पूरी की पूरी. But उसके बाद what it also wants is that how do you want these points to be? So for that we have given geom. Now what this is that we want a geometric object to show in the graph, which is basically scatter plot में जो आपको points चाहिए, each particular country should be in a form of a point. So it should be a geometric point, a circular point which will show each particular country. तो इस तरीके से, and there are different formats. We'll see that in different parts क्या चाहिए किस तरीके से और हो सकता है. ठीक है, so what we do is we run this. पहले हमें ये रन करना है, शायद से नहीं ये रन कर दिया. We run this and we get plot. Should have got a plot. Can you see guys? Can you see this relationship between? Can you see this relationship between GDP per capita? जीडीपी पर कैपिटा कैसे बढ़ रहा एंड किस तरीके से आपके ये पॉइंट्स जो है ये आपके बढ़ रहे हैं इस तरीके से. बट इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. So the last side GEOM. Yes. Point. What is that? ये बेसिकली है कि हम प्लॉट किस तरीके से करना चाह रहे हैं उसे. वी वांट अ ज्योमेट्रिक पॉइंट. ये जो सर्कल है वी वांट इन इट फॉर्म ऑफ नॉट इन फॉर्म ऑफ अ बबल. वी वांट इट इन एज अ स्मॉल पॉइंट. सो वी कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेशंस कि हम ये हर एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. वी वांट इट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर पॉइंट. तो उसके लिए वी हैव यूज्ड दिस geom. Geom basically stands for geometric and underscore point is basically a point format. With you can have different kinds of formats. We will talk about more about them. So there must be something which is like by default. You have to specify this. I guess. Okay. But again, I'll come back to this if there is any default. Okay? Clear guys? आज की class clear? So try your hands on different things. Try to see different kinds of relationship between your x and y variables, and check if you can come up with more inferences out of this data, and then you can always copy this image and use this image for your analysis later on, or for your projects, whatever you're trying to do. Chalo. So I hope we are clear till here. Yes, no? Yes. Okay. Let's meet on Friday, guys. So thank you very much, and thank you Aishwarya
for taking up the early section. So Thank you, sir. okay, thank you very much, guys. Okay, bye bye. Jai Hind.